Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Keep the charts clean. We'll start in 2 minutes. Good morning, Varun. Good morning, Usma. Good morning, Tosif. Good morning, Ranjit. One more person yet to come. आ जाने दो. कोई भी डाउट है पूछ लो एक बार. Yesterday's intraday video took the exact rejection from 200%. His point of interest. Yes. It did take the rejection. Good morning, you. You're late today also, man. So starting with gold daily time frame, what are the major concerns that you have to be looking for, right? So the major concern of allocation will always be in the previous act of movements, right? इस point of action में majorly क्या देखना है आपको, movement allocation कैसे और किस तरफ आती है. In this scenario, ये मेरा previous demand zone of action था. इस demand zone of action के साथ movement regenerate हुई थी with the supply creation, correct? इस supply creation के साथ market had given a continuity in the movement. When there was a continuity in the movement, market ने यहाँ पे एक rejection लिया था. Rejection कितना develop हुई थी? The previous supply. जो supply gets converted into my demand. When my supply gets converted into the demand, मेरा next step of action plan क्या होना चाहिए? Continuity में moment action, right? So इस point of range में मेरा जो previous supply है, that will act as my current. With the current, there is a continuity. So what I'll be doing, I'll be marking the moment action plan of 150 and 200%.
right? So we have a rejection. Rejection कितना लिया market? जो previous demand zone of action create होते हुए दिखी है. In this scenario, ये मेरा entire demand action plan है. With this demand action plan, the rejection, right? इस rejection के साथ continuity में movement generate हुई थी. इस movement action plan का major point of allocation कितना होना चाहिए? जो मेरा previous point of range है supply का, that will act as my current. So in this scenario, this will be the markup. Where did market tend to take the rejection? Exactly from the 100% range out. With the 100% range out, what are the next step of actions that will be taken under the consideration? कितना movement यहाँ पे generate हुआ और कैसे? In this scenario, ये मेरा previous है, right? So the previous action plan will act as 1. With the act plan 1, continuity, 100% breakthrough, 150% rejection, right? When there is a 150% rejection over here, हमारा next plan of conduct action में क्या होना चाहिए? The next action plan will be as per the previous allocation of the first. In this scenario, A मेरा rebound effect है, which was completed at 200%. With the 200% range, I will look for the new allocation at the current movement point. Right? With the current allocation with 150%, market ने क्या किया? Continuity. With the continuity, market is almost nearby to 200% range. So हमेशा याद रखिए rebound effect जब generate होता है 200% range will be the target, right? At each and every point of action. ये हमेशा आपको याद करके चलना चाहिए कि रिबाउंड इफेक्ट में मूवमेंट एक्शन प्लान विल नॉट बी एज पर 150%, इट विल बी एज पर 200%, राइट? विद दिस प्लान ऑफ एक्शन आज का हमारा स्विंग का ट्रेड ऑफ अलोकेशन कितना था? 3260, which is exactly marking at the same point, right? With this come down to 4 hours. Mathematical calculations karo with the circulating supply. With that plan of action, market ने currently movement long के तरफ build किया है. What are the position of movement allocation तो आपको देख के चलना चाहिए. At this current range of action, first point of interest कहाँ पे है? Supply का. Supply का point of interest हमें हमेशा previous range of movement के साथ देखना चाहिए. क्या आप इस point of action को देखोगे या इस point of action को देखोगे? Right? ये entire movement is in a bearish structure. So in the bearish structure, you have to not consider the movement in the swing. You have to consider the movement from the bullish movement side, right? In this price action, मेरा supply generation was through the previous of the bullish movement. Swing trade में ये होगा, अगर इंट्राडे में allocation देख रहे हो तो ये green candle और ये green candle का भी ले सकते हो, right? With that movement plan of action, what did market tend to do? Market gave a break. There is a minimality zone created. Minimality zone कौन सा वाला? Minimality zone 2, M2, right? M2 zone में what do we notice? The gap range. The gap range is of 100 pips. इस point of action में हमेशा 200% की target होती है. So what did market tend to do over here? Market tend to complete the 200% range, right? इसी point of action के साथ what is the next steps will be taken under the consideration? The next step of consideration will be into the previous action zone. Previous action zone matlab this is our minimality, so we'll change out the color. Right? With this zone of action, we had a rebound effect का movement जो था वो क्या होता daily time frame पे in the circulation of 200%, correct? इस movement में हमारा 4 hours में क्या देखना चाहिए? The current movement of the supply. In this scenario, this will act as my normal supply, not the surplus, not the minimality. The normal supply will act as your zone of conduct post the movement of the retracement, right? This retracement point of action में जब movement आई, what do we notice over here? We have a break of structure.
With the break of structure, we have a minimality zone created, correct? So now, yes, you can consider this as a minimality zone of action, right? जब ये minimality zone of action conduct होती है, what will be the plan of action that you will be looking for? You will be looking for a movement action plan of 150% and 200%. In this scenario, where is market trying to take the rejection from? The market is trying to take the rejection from 150%, right? So with the 150% action plan, 200% की movement range of allocation है, which is at the current state of 3311, right? So ये हमारा swing का next target allocation हुआ, but हमेशा एक चीज याद रख के चलिए कि हमारा daily time frame का midway में ही target आ जाती है, which is 3263 पे, right? So always remember daily time frame का target पे remove out few of the quantities. On the break and continue, we can look till 3311, right? उस point of action तक movement allocation देख के चलेंगे, right? So at the current point of action, movement ऊपर के लिए तो देख लिए, ये movement action plan भी तो identify करना है, right? ये आप लोग करके बताओ. With that, let's come down to 1 hour. Mathematical calculations भी आप लोग ही करोगे, okay? At the state. With this point of actions, what are the major things that we'll be working over here at the current point? एक सेकेंड. Okay. So with this point of action, what are the major next steps that will be coming under the consideration? हर एक movement plan of action के साथ जो allocate होता है through the POI range of actions and circulating supply, right? क्योंकि 1 hour में है, 1 hour में majorly क्या identify करना होगा हमें? स्विंग ट्रेड ऑफ अलोकेशन तो हमें मिल गया है, इंट्राडे वालों को भी अभी देखेंगे विद द एक्शन प्लान सर्किट. विद द एक्शन प्लान सर्किट क्या होती है? whenever there is a circulating supply movement, that will be your action plan to start. So in this scenario, the circulating supply was at this point of action. इस point of action के साथ rejection लिया, rejection लेके continuity में movement generate होते हुए दिखी, correct? So now at the first point of range क्या होगा मेरा supply? Supply point will be this, right? Because circulating supply खत्म हुई है, उसके बाद का first movement action point retracement हुआ, retracement के साथ continuity, market ने कितना retrace किया? जितना मेरा previous supply generate हुआ है, that will act as my current demand, correct? So in this scenario, मेरा current demand generate होते हुए दिखिए यहाँ पे, इसके साथ there was a breakthrough and continuity, right? We have a minimality zone of action. When there is a minimality zone of action, 100% से rejection लिया. With the 100% rejection, market tend to take a rejection from 150 and 200%, right? So when there is a rejection over here at 200%, what are the next steps that will be taken under the consideration? क्या यहाँ पे हमें सेटअप बिल्ड होते हुए दिखी 1 hour पे? नहीं. जब सेटअप नहीं है 1 hour पे, तो आप क्या करोगे? आप स्ट्रक्चरल अलोकेशन करोगे. स्ट्रक्चरल अलोकेशन कहाँ पे होगा? जो मूवमेंट एक्शन प्लान रिट्रेसमेंट तक की होगी, राइट? ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है. सर्कुलेटिंग सप्लाई के बाद एक मिनिमलिटी जोन ऑफ एक्शन, मिनिमलिटी जोन ऑफ एक्शन के साथ जो 100% पे जो रिजेक्शन लिया, राइट? तो इसे हम मार्क आउट करेंगे. इफ इट्स इन द रेंज ऑफ 100%, then we will look for entire supply movement from the circulating zone. मतलब from this point of action till the 100% will be my new markout, because that will act as my surplus, right? जब surplus movement act किया, what do we notice? We had a regeneration of minimality at the current state. With that, 150% will be the target point allocation.
right? So target point allocation के साथ what are the major things that you have to be looking at? क्या 150% से rejection मिला या नहीं? At this state of action, we have 150% rejection, right? So it's over here. Okay, so yeah. Right? So with the 1 hour action plan, हमारे को 150% से rejection मिला है. With the rejection, we had exact movement action plan of S2B2. S2B2 के साथ continuity में movement generate होते हुए दिखी है, correct? So यहाँ पे what are the next step of action plans that will be taken under the consideration? क्या आप डायरेक्टली 200% तक वेट करोगे? नहीं. यहाँ पे यू एग्जिट, बिकॉज इंट्राडे ट्रेड्स में टारगेट्स में एग्जिट करना होता है. रीजनरेशन ऑफ द सेटअप दिखने को चाहिए, तब जाके एग्जीक्यूशन, राइट? स्विंग ट्रेड्स इज डेफिनेटली यू विल बी फॉलोइंग द एमटीएसएल के साथ कंटिन्यूटी में बने रहना. At this point of action, mathematical calculations कहाँ से करोगे आप लोग? This will be your swing low, right? And this will be your swing high, because pure range of action यहाँ पे है. Swing high ये होगा, retracement point ये वाला. With that, do the math and let me know what are the targets, right? So coming down to 15 minutes. All the allocation is done. Each and every structure is completed. When the structures are completed, what will be my next point of allocation that I'll be taking under the consideration? The considerative point of actions will be through the previous. How do you look into that? सो एट द करेंट स्टेट ये टारगेट होने के बाद कल के वीडियो में सैट एट द एयरपोर्ट एंड क्रिएटेड दैट. वाई? फ्राइडे के दिन थी. फ्राइडे के दिन ये मूवमेंट डेवलप हुई थी, करेक्ट? इस मूवमेंट के बाद क्या आप लॉन्ग करोगे? नहीं. कभी भी फ्राइडे की क्लोजिंग मार्केट टाइम पे कभी भी कुछ भी मत करो. अगर ट्रेड सुबह से हो तो बने रहो, वरना नहीं, राइट? एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन अगर अलोकेशन दिखाना है तो मैं वो अलोकेशन फिर से दिखाऊंगा, राइट? सो ये हमारा डिमांड था, क्लोजर डिमांड, फर्स्ट सप्लाई पॉइंट, राइट? फर्स्ट सप्लाई पॉइंट कितना हम अलोकेट करेंगे? हम अलोकेट करेंगे जो प्रीवियस है. अगर मार्केट 150 रेंज से 200 रेंज के बीच में आती है, देन वी वोंट लुक फॉर एन एग्जीक्यूशन. एट दिस पॉइंट ये मेरा 100 था, ये 100 के साथ 150 से रिजेक्शन लिया, करेक्ट? Once the market took the rejection, what is the plan of action that you will be having at this stage? आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए गैप डाउन कहाँ पे ओपन होगा, right? In this scenario, this was our 100%. With the 100% कंटिन्यूटी में स्ट्रक्चर बिल्ड थी. अगर फ्राइडे की स्ट्रीम पे जाके देख लोगे तो दिस इज द मार्कआउट दैट वी हैड मार्क. ओके, आज का मीन्स कल का वीडियो का एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं आया है. ये हमारा फ्राइडे की मार्किंग थी शॉर्ट की तरफ. This will act as our 200% and this will act as our 150%. क्या मार्केट ने दोनों रिजेक्शन लिया एट द परस्पेक्टिव? यस, दोनों रिजेक्शन लिया. विद दैट अब आएंगे कल के वीडियो के हिसाब से, जहां पे आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन थी. यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन की. एनी डाउट? नो. So when there is a gap down opening, what will market tend to create? Market will tend to create a POI zone of action, जो हमें इस पॉइंट ऑफ एक्शन में बिल्ड आउट होते हुए देखिए. यहाँ पे मूवमेंट स्ट्रक्चर कितना बिल्ड होगा? जितना मेरा रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन है, that will act as my current. In this scenario, this is my POI range, break of structure with the break of structure 200%, right? With the 200% range of action, what are the next steps हमें जो देख के चलना चाहिए? The next plan of action was through the allocation point of previous. In this zone of conduct, this was my demand. With the demand action plan, हमने layout draw किया था. इस layout के साथ minimalistic zone of action generate हुई थी.
मिनिमलिटी जोन ऑफ एक्शन के साथ 150 एंड 200% के allocation, right? So where did market tend to take the rejection from? Market tend to take the rejection from the same spot of action, right? With the same spot of action, what are the next plan of indications? Reallocation points. Reallocation point में हमने clearly explain किया था market क्या करेगा. अगर market को ऊपर continue करना है, it will take the rejection as per the inducement, correct? Inducement range of action कौन सा markout में थी? ये वाला. जितना मार्केट में इंड्यूसमेंट रेंज जनरेट होते हुए दिखा है उतना ही मूवमेंट सर्कुलेटिंग में दिखने को मिलेगी, राइट? एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन वी हैड ए इंड्यूसमेंट कवरेज. इंड्यूसमेंट कवरेज होने के बाद व्हाट डू वी नोटिस? वी हैड ए बाइंग प्रेशर ओवर हियर. जब मार्केट में बाइंग प्रेशर जनरेट होते हुए दिखती है, व्हाट आर द फर्स्ट सर्कमस्टांसेस दैट यू हैव टू बी लुकिंग फॉर? क्या मेरा प्रीवियस सप्लाई एंटायर मूवमेंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मैच हो रहा है क्लोजर पे, डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर ए लॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? हमेशा ये चीज याद रखना, जब भी मूवमेंट एक्शन प्लान में डेवलप होते हुए दिखी है, यू कैन लुक फॉर ए कंटिन्यूटी इन द स्ट्रक्चर एंड बने रह सकते हो. विद दैट व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ एक्शन? मार्केट ने रिट्रेस कितना किया? मार्केट ने उतना ही रिट्रेस किया जितना मेरा प्रीवियस डिमांड एक्शन प्लान ऑफ इंड्यूसमेंट था. ये मेरा पूरा इंड्यूसमेंट रेंज ऑफ एक्शन है. ये इंड्यूसमेंट रेंज ऑफ एक्शन में जितना मूवमेंट रिट्रेस होना था उतना ही होगा. यहाँ पे बॉडी से क्यों ले रहे हम? क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है. सो द मार्कआउट्स विल बी एज पर्सपेक्टिव एज the body to body allocation. Body to body allocation होने के बाद we have a break of structure. When there is a break of structure, entire supply will be taken under the consideration. With the consideration of entire supply movement, what is the market tend to indicate you? Market had tend to indicate you a structure as per the previous. Do we have a rejection over here? Yes, we do. With this rejection perspective, what did market try to indicate? Market tried to create a M2 again, right? What is the plan of action? 50 pips के ऊपर है कि नहीं, right? It's in the allocating point. Yes, it's in the allocating point. With this allocating point, what will be your next target? The next target range will be of 150% and 200. One 50% and 200. Any doubts, guys? Gold. This is your intraday targets. कोई भी डाउट है पूछो, उससे पहले मार्कआउट्स ले लेंगे. Mathematical calculation intraday, sometimes market does not reverse and continue, so instead of reversal do we need to mark a new target in the same direction? Observation: post completion wait for POI, mark the targets in the direction of the break of structure is my observation. Correct? Definitely I'll come to that point, give me some time as well. कोई भी doubts है, please do write it out in the comments.
ब्यूटीफुल गाइस, 150% की टारगेट हिट हो चुकी है। Nope, no doubts. Okay. Good morning, Nilesh.
Good morning, Suman. Okay, great. कहा था वो कहीं पे तो मार्किंग थी ना. Here. What is this? This is too big. I've already explained. Please go in the video and check it, Suman. कल की इंट्राडे वीडियो में वो है. It's mentioned. Okay, gold is done. Set to go. Coming down to BTC. किसी का कमेंट आया था रंजित का, गॉट कंफ्यूज्ड इन बीटीसी करके. क्या कंफ्यूजन था जनाब, बताओ. व्हाट वाज योर कंफ्यूजन? रंजित का ही था ना वर्ष? हाँ, रंजित.
Yesterday in 1 hour. Okay. पूरा तो लिखो, क्या प्रॉब्लम क्या है? What happened in yesterday 1 hour? This is my first demand. With the first demand action plan, market took the break and continue. 100% closure. Market कितना retrace किया? In the plan of action of 1, जो previous demand allocation of supply है with the inducement range that will act. Exact rejection with the exact rejection continuity with the continuity 200% closure. With the 200% closure, whatever will be the plan of action of the previous demand, that will act as my current. With the current movement allocation, there was exact rejection perspective which generate hua tha, that's totally fine, and continuity. In continuity spectrum, this was my previous supply. A previous supply को हम allocate करेंगे with the allocation continuity with the continuity 200% rejection. क्या डाउट है इसमें? Okay, let's start the analysis of 1 hour, sorry, BTC. So major point of interest क्या होना चाहिए? क्या चीज पे फोकस करके चलनी चाहिए? Right? At the current state of actions, आज का जो ट्रेड है मैं उसे हटा रहा हूँ.
राइट। सो जैसे ही हमारा डिमांड जोन ऑफ एक्शन कंप्लीट हुआ है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होगा? मेरा इंड्यूसमेंट रेंज। राइट, इस स्टेट में दिस विल एक्ट एज माय इंड्यूसमेंट, right? So we will change out the color to green with the inducement range of action continuity, right? So in the continuity circumstances, what are my next plan? The next plan of action will be in the breakthrough. Continue है, जब continuity में movement है, then why do you have to worry? 150%, 200% rejection, 150% से rejection लिया, फिर से allocation कितना होगा? यहाँ पे अलोकेशन उतना ही होगा जितना आपका प्रीवियस डिमांड जोन है। इन दिस सिनेरियो मेरा ये सप्लाई है, राइट? ये सप्लाई एक्ट करेगा मेरा डिमांड के जैसे, राइट? विद दिस प्लान ऑफ एक्शन मार्केट टुक ए रिजेक्शन। नाउ आई विल reallocate the structure 1, the entire supply will act as 1 with that point of interest continuity, with the continuity break and move, in the break and move reallocation, राइट? जब रीअलोकेशन स्पेक्ट्रम जनरेट होते हुए दिखी है, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन प्लान दैट यू हैव टू कीप इन माइंड? इज इट अ मिनिमलिटी जोन ऑफ एक्शन? नहीं। सो यहाँ पे 150 एंड दोनों 150 एंड 200% बोथ विल एक्ट इन द जोन ऑफ एक्शंस। सो ऑलवेज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि डू वी हैव अ रिजेक्शन एंड कंटिन्यूटी, राइट? विद द रिजेक्शन एंड कंटिन्यूटी आपके पास एक चीज होना चाहिए, 1 आवर पे जब आप नोटिस कर रहे हो, देयर शुड बी ए रिवर्सल। रिवर्सल के लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट के लिए आपको मेजरली क्या आइडेंटिफाई करना है? त्रिशूल। अगर त्रिशूल है, वेल एंड गुड, त्रिशूल नहीं है, वेट। ओके, सो वी डू हैव एग्जैक्ट रिजेक्शन फ्रॉम द सेम 200%, उससे पहले एक रिजेक्शन हमारे पास 150% में भी था। With this plan of action, what do we notice? Do we have a continuity of a threshold? Yes, we have a continuity of a threshold. So 200% तक holding. इस 200% के पास holding के पास, what do we notice? There is a selling pressure, right? With this selling pressure, definitely market went down and created a buying pressure again at this scenario, correct? But जैसे ही बाइंग प्रेशर अलोकेट हुआ, what did the circumstantial move of Sunday did over here on 13th? मार्केट ड्रॉप कन्वर्ट की, राइट? जब ड्रॉप कन्वर्ट की, क्या आप इस कैंडल में एग्जीक्यूशन देख सकते हो? यस, डेफिनेटली 15 मिनट में। बट स्विंग के लिए देख सकते हो? नहीं, बिकॉज जो नीचे से ट्रेड में बने हो, वो ट्रेड का एमटीएसएल पॉइंट जब तक हिट नहीं होता है, तब तक हम रीएलोकेशन स्ट्रक्चर देखेंगे फॉर द स्विंग। ओके, बट इस सर्कमस्टांसेस में आप मेजरली क्या अलोकेट करके चल सकते हो, राइट? हमारा सप्लाई कंप्लीट हुआ है, सप्लाई कंप्लीट होने के बाद डिमांड अलोकेट हुआ है, डिमांड अलोकेट होने के बाद टू वेज ऑफ लुकिंग इनटू द मार्केट आप देख सकते हो, दो टाइप में अलोकेशन देख सकते हो, जो कि फर्स्ट विल बी योर प्रीवियस डिमांड। ओके, प्रीवियस डिमांड के साथ व्हाट डू वी सी? देयर इज अ ब्रेक थ्रू ऑफ 200 पॉइंट्स। सेशन कौन सा था? सेशन वाज एशियन। एशियन सेशन में 200 पॉइंट्स इज इन द रेंज ऑफ कंडक्ट। रेंज ऑफ कंडक्ट मतलब कंटिन्यूटी ऑफ 150% एंड 200%। ओके, सो मिनिमलिटी M2 जनरेट होते हुए दिखी थी, उसके साथ 200% की रेंज अलोकेट हुई। डेफिनेटली आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो एट दिस पॉइंट ऑफ रेंज व्हाट यू कैन डू इज रीअलोकेट योर फर्स्ट डिमांड थ्रू द नेक्स्ट। ये तो आप कर ही लोगे। ओके, एग्जैक्टली फिर से 100% से रिजेक्शन लिया। With the rejection, what is the market indication over here? The market indication is in the zone of action of the body. At this current stage, there is no break of structure, so only body will be taken under the consideration, wick nahi. So यहाँ पे there was a break and continue, 100% break हुआ था, with the 100% break, 200% rejection. Right? 200% rejection के साथ reallocate करो, reallocation में आपको फिर से 100% rejection देखने को मिलेगी. Right? With this rejection, do we have to reallocate again? नहीं, क्योंकि at this current point of range, market एक ही zone of action में, ना हमारा previous zone को break किया,
ना नीचे की एक्शन प्लान को ब्रेक की, करेक्ट। विक जनरेट किया है, विक जनरेट किया है, दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि ये हमारा 200% रेंज ऑफ एक्शन है। उस रेंज ऑफ एक्शन के साथ देयर इज अ रिजेक्शन। आई एम ओके विद दैट पर्सपेक्टिव एट द करंट स्टेज। इसके साथ व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप, माय नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन प्लान, नाउ आई विल लुक फॉर अ रीअरेंजमेंट, राइट। रीअरेंजमेंट कैसे देखोगे? Rearrangement will be taken in positions to the previous, right? Do we have a pressure built? Yes, definitely pressure built. There is a threshold. Yes, definitely there is a threshold। इस point of action में जो हमारा 100% range है, entire movement will be taken under the consideration, right? With this movement action plan, first step of action, because there is a break and continue, with the break and continue, what do we notice? We have a movement with the movement action plan 150% and 200%. Is this 200% matching in the range? Yes, definitely it's matching in the range. It's not any minimality, na ye movement mein hai. This is just a normal supply which has taken a multiplied supply in the continuity. When there is a multiplied supply in the continuity, the targets will be 150% and 200%. In this scenario, the action plan layout was in consideration to the previous. Do we have a 150% rejection? Yes, definitely. In this state of action, if you notice, this was our 150% rejection. Right? With this 150% rejection point, आज के दिन में मार्केट हमें क्या सर्कमस्टांशियल वे ऑफ एविडेंस दिया मंडे के दिन, राइट? मंडे के दिन एक रेंज में थी, राइट? हाउ मेनी आवर्स? 6 आवर्स। जब ये रेंज ऑफ अलोकेशन में था मार्केट, मार्केट क्या कर रहा था? यहाँ पे हर एक रिटेलर्स को हंट कर रहा था। जब हर एक रिटेलर्स को हंट करता है, व्हाट इज द फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन मार्केट जनरेट करते हुए दिखाएगी आपको? a movement execution point. A movement execution point in the circumstances will be taken in consideration of the previous. Do we have a liquidity calibration over here? With each and every candle, there is a liquidity calibration, right? Point of action 1, point of action 2, point of action 3, right? These are the liquidity calibration range zones. यहाँ पे ट्रेड करोगे तो कैपिटल ब्लो करोगे, सो वेट। सो एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन मेरा एक पीओआई रेंज ऑफ एक्शन था। पीओआई रेंज ऑफ एक्शन के साथ मार्केट एक कंटिन्यूटी में बिल्ड आउट दिखाई थी। इस बिल्ड आउट में मेरा लिक्विडिटी कैलिब्रेशन जोन का सिर्फ सिंगल कैंडल विल बी टेकन अंडर द कंसिडरेशन, right? So at this point of action, what do we notice? We have an exact 100% breakthrough. With the breakthrough, there is a retracement. Retracement will be of POI range. Entire POI range जितना movement है, वो movement action plan में develop होते हुए दिखेगी. That will act as your current. With the current, market has taken the rejection, right? With the rejection and continuity, what will be the plan of action in the consideration? The plan of action in the consideration will be your previous supply. This will be your plan of interest of 1 hour at the current stage. इसके साथ majorly coming down to 15 minutes. Right? 15 minutes allocation point में what do we notice? Each and every zone is with a circulating supply. Definitely वो जो long trade off action point में जो आप लोगों को trade लेना है नहीं लेना है करके बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। Can we execute the trade? Yes, definitely, because यहाँ पे हमारा S2B1 setup generate हुई थी। S2B1 के साथ continuity में movement था, right? So with this plan of action, we could have looked for a short. With the short action plan, next step of allocation क्या होगा? At this Monday day, आप trade कर रहे हो तो definitely आप capital blow कर रहे हो। हाँ, setup में trade कर रहे हो, not an issue. S2 setups are majorly identified in BTC, S2B1, S2B2. इस trade off action में हो, I don't have any issues, right? At the current state, if you notice, the entire movement action plan is in the setup from yesterday till today. Setup 1, setup 2, right? Setup 3, setup 4, right? इसके बाद अगर आप ट्रेड किए हो
तो डेफिनेटली आप नींद सोए नहीं हो तो ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे देखे होंगे, दिस इज द लास्ट। उसके बाद देर इज नो मोर सेटअप्स। अगर सुबह के दिन जल्दी उठे हो 3 बजे को, then this is the S2B2 setup which you could have executed. And this is a circulating supply, so definitely there will be hunt out. ओके, सो ये जो मूवमेंट ऊपर के लिए क्यों गया था, यहाँ पे एक सर्कुलेटिंग सप्लाई था, उस सर्कुलेटिंग सप्लाई को लेवल आउट करने के लिए मार्केट ये ऊपर आए थी। सो दिस इज योर बीटीसी फॉर टुडे। हरी भरी में ट्रेड मत करो, सब लोग इधर एसएल दे रहे हैं तो आप लोग भी एसएल देने मत बैठो। Am I clear in BTC?
Ranjit, first get perfect in something one. Then jump the process. ये सभी एक ही कलर में है क्या? कौन सा मिनिमलिटी है? M1, M2 मिनिमलिटी, M2 मिनिमलिटी, M1 मिनिमलिटी, M1, M1, inducement coverage. Plus same color. அப்படியா? Great. Good morning, Bharat. If only BTC is your target, first learn what BTC is doing. First identify the supply and demand. Once you're 90%, then come to me on identifying of mathematical calculations. Till then, no. Coming down to Indian markets, no interest. 4 दिन का gap up open हुआ है आज, but अच्छा gap up, 400 points in Nifty. Yes, यहाँ से हम इंटरेस्ट रहेंगे लॉन्ग के स्विंग के लिए, क्योंकि मूवमेंट एक्शन प्लान जो हम फ्राइडे के दिन बात कर रहे थे इसके ऊपर क्लोजर, राइट? Now we will be interested to look for the swing allocation towards the law. Why? इसी point of action में देख सकते थे या इस point of action में देख सकते थे, premiums were not at its best. ना गामा चेंज हो रहा था ना डेल्टा. आज के दिन छोड़ देते हैं, कल के दिन में स्विंग अलोकेट करते हैं. Done. Great. All the new members do 1.5 years of back testing, 1.5 years of forward relay bar testing, 1 month of live analysis with that small account execution to build the confidence and growing the accounts. किसी को भी कोई और doubt है, please do comment in regards to the markets. Why are you laughing, Varun?
You drew the entire supply and demand in 3 minutes of 1 hour. So was laughing. Work in progress, sir. 1.5 years back testing. Great, Bharat. Whatever doubts you guys are having, please do comment so that I can help you out in regards to the market. Okay? मैंने मना कब किया? आप लोग कभी भी चाहिए तब ट्रेड करो, आपका पैसा है यार. So this 3 months back testing okay for single concept and complete back testing after completion of MC and supply and demand and liquidity and volume. Usma, adding MC, supply and demand, liquidity and volume becomes one concept, right? It's in the parts. So all three should be done together. Definitely, I know that you might be feeling bored, but अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो कैसे? 1.5 years identify करो. Then 1.2 years से मैं 1.5 years of forward relay bar पे आया. 1.5 years forward relay bar, उसके बाद 1 महीना live analysis. अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे लाइव पे? No sir, not boring at all. Now you're saying not boring. You will be doing the same thing for coming ages. So definitely you will be bored, right? Money is made only in the boring stuff.
क्योंकि आप एक ही चीज रोज दिन रात वही करोगे, कुछ नया नहीं। एक कहावत है, सुना तो, ब्रूसली ने बोला था, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ ए पर्सन हु नोस 10,000 different kicks. I am scared of the person who has trained the one kick for 10,000 times. So, yes, definitely we will be working only on one kick, not 10,000 different varieties of. So, yes, this is the only thing what you will see in TTS. कुछ और मैं सिखाने वाला नहीं हूँ, कुछ और मैं करने वाला नहीं हूँ। अगर आपको वैसे चाहिए कि हर एक स्ट्रैटेजी चाहिए, हर एक मूवमेंट चाहिए, हर एक इन डिटेल, या जस्ट ऊपर ऊपर से बताने वाले चीजें चाहिए, यू कैन अनसब्सक्राइब राइट नाउ एंड यू कैन फाइंड एनीवन एल्स। नो हार्म, नो फोर्स। If you have to build a track record, you have to create the edge. So I am here to help you out to build your own edge. If you want to find your own edge, be with us. If you don't want to find your own edge, we're happy to leave. Okay? डेफिनेटली जो एड ऑन टॉपिक्स है मैं ऐड करता रहूंगा, जो मैं बताया नहीं वो आप लोगों को। बट एक ही चीज होगी यहाँ पे, मॉर्निंग में, इवनिंग में, लाइव पे, वीडियोस पे, वो होगा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वो होगा सप्लाई एंड डिमांड, वो होगा लिक्विडिटी। ये तीन छोड़ के मैं कुछ और बात करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आई वर्क ऑन 100% accurate strategies, not on 30, 40, 50, 60. And we are not here to copy someone and stay in the markets. We create our own, and we have practiced it, we have back tested it, we have forward tested it, and yes, we have implemented it. This Bruce Lee dialogue is trending on YouTube. वो अभी ट्रेंड हो रहा है ना? The youngest martial artist who died at the age 32. वो पूछ के देखो, ये ट्रेंड हो रहा है नहीं हो रहा? ये डायलॉग नहीं है, कोट है उसके बुक में। I'll keep my patience. Sure, Usman. Please do. And definitely there will be one more setback that you guys will go through. एक दिन ऐसा आएगा, ना पेशेंसफुली बैठ पाओगे, ना कामलेसली ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, राइट? क्योंकि सेम चीज आप कर रहे हो रोज। एक दिन में एक ही चीज होगी कि आप एक बार में अकाउंट उठाओगे, तब आपको समझ में आएगा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वॉन्ट रिपीट। अगर कामनेस एंड पेशेंस खो बैठे हो, तो अकाउंट को लॉग आउट करो
and go on a trip. Short trip is also fine, but go on a trip because you're training your eyes as an indicator, right? You don't need any indicators while you're training your eyes every day on the same concept, right? You don't need to have an indicator because eye is one of the best indicators that you are having. Indicators लगाओगे तो दिमाग के जैसा वो भी लैग होता है. So always remember one thing, trade what you see, not what you think. It's based on that only, right? So always wait at the right point and learn. Yes, sir, in an interview, a person tells that dialogue about Bruce. It's not a dialogue, it's a quote. अगर आप लोगों को 1000 वेराइटीज ऑफ ट्रेडिंग सीखना है, ढूंढो यार. हर एक चैनल को ढूंढो, हर एक यूट्यूब हॉपिंग करो, चैनल हॉपिंग करो, मजे करो. Sir, I have two doubts, one in intraday and one in swing. I have mentioned the intraday but unable to understand swing. Unable to accurately identify the swing high and low. My previous understanding for swing high and low was clear. 5 to 8 candles followed by couple of candles for retracement. Even though I saw the video but unable to understand why a certain candle was not considered as a retracement. Definitely, before closing, I will definitely explain you how exactly the retracement needs to be looked. Okay, so that's the reason the combo is taken under the consideration of mathematical concept, supply and demand, and liquidity. You can let go volume if you are not able to understand. But yeah, this three is very much important. Volume is important only for beginners. Okay. Excuse me, guys.
I saw a comment, it was fun. I saw a comment, it was funny on your video. He didn't understand the concept, so he was saying, if your strategy is so accurate, then say it properly, not we nahi hai bol. And what a reply by your team. 200 pips running. Thank you for teaching this concept. Crossed 100k today. Sorry, 10k today. Keep it up, Sama. Good morning, Patel. Great, Sama. $20 to $10,000. Great job.
कोई बता रहा था एक्यूरेट नहीं है ट्रेडिंग। छोड़ो ना स्मिता मैम, दूसरों का बातों पे हम विश्वास नहीं करते हैं, ना हमें फर्क पड़ता है। एंड समर्थ फॉर यू वन थिंग, ओनली वन थिंग, राइट? 10,000 कमा लिया करके घमंड लेके बैठोगे तो उड़ा डालोगे। सो या, ट्राई टू बी हम्बल फॉर योर सेल्फ, नॉट अदर्स। स्मॉल टिप, I do understand there is a lot of coverage you need to do. More $70,000 needs to come into your account. But yes, try to be humble for yourself. Okay? I never spoke about no overtrading, no FOMO, no running exhibitions. 'All the LTD members, swing trade का MTSL point. Thousand points in BTC ID.
Wow, got 40 pips in gold. Venkat, stop executing the trades in running candle. 1000 बार बोल चुका हूँ कि रनिंग कैंडल में एग्जीक्यूट मत करो, आप फिर भी वही करते हो. Well done, Samarth. You're not happy when you had made $10,000. Come on, you're in the finance world. छोटे छोटे प्रॉफिट्स देखे खुश होने लग जाओगे, हो गया. Be happy when you can say that your entire upcoming 3 to 4 generations can sit by doing nothing and enjoy. Then you can be happy. Every day is a learning day. So, yeah. What should I say? Don't say anything, Anjali. If I go in deep, you will be shocked that $10,000 is just 1 hour. 1 hour में calculate करके देखो. He has just earned 1,388 rupees per hour. How to do that? Calibrate your $10,000, convert it into Indian currency. Indian currency में convert करने के बाद divided by 30 करो. Divided by 30 करने के बाद उसे divided by 24 करो. That is his hourly earning. तो मेरा कितना है? 1,73,000.
और आपका? मेरा क्यों बताओ? आईडी का एमटीएसएल पॉइंट 85 250 पे रख लो। स्विंग का जहां पे रखा है वहां पे ही आईडी का 85 250 पे रख लेना। वरुण को बोलो लाइव पे हंसो मत। उसे बोलो कॉमेडी करना बंद कर। आप दोनों की लड़ाई में मेरे को क्यों बीच में ला रहे हो? तो खुद यूटीज में आ जाओ, आके लड़ ले उससे। इंडियन मार्केट पीओआई रेंज में 10 minutes ड्राइव। 300 मोर पॉइंट्स है टारगेट कंप्लीट होने के लिए आईडी का। वर्षा नाम क्या है? ये जो स्क्रीनशॉट तुम शेयर किए हो ना, उसका नाम क्या है? Sachdev. Good morning, Sachdev. Thank you for making me laugh in the morning. At first place, the screening what you're seeing over here, the chart is not in 1 minute. And this is not 100 points movement. Okay? Right? अगर तुम्हारे हिसाब से मैं 1 मिनट में डाल के दिखाऊं,
This is the entire moment what you have captured. Okay. एंड रही बात आपकी सिखाने की तरीके, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है आपको समझ आया या नहीं। मेरे को इतना ही फर्क पड़ता है कि कितना शिद्दत से आप सीख रहे हो। लिक्विडिटी कैलिब्रेशन करके कहीं पे बुक्स में नहीं है। जितने भी लोग बुक से पढ़े हैं ना, आज तक कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया है जिंदगी में, गिने चुने लोगों को छोड़ के। सच्चाई कड़वी है सचदेव, बट हकीकत में वही है। क्या कर सके, सॉरी क्या कर पाए। सीखना है तो सीख सकते हो, नहीं तो अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसा यूट्यूब स्ट्रीम दिखा दो जो मिलीनियर्स को जनरेट किया हो। जीरो चार। मैं तुमसे पूछा ही नहीं भाई, तो शांत रहना। मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की हिम्मत नहीं रखता है, जो व्हाट्सएप करके बोल रहा है। करना भाई, प्रूफ हो जाएगा मेरे को भी। कोई और मेरे को भेजने से अच्छा मैं डायरेक्टली बोलूंगा ना, जो भी चीज है करो। मेरे को किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट फर्स्ट प्लेस। कोर्स बेच के मिलीनियर खुद हो रहे हो। For your kind information, I don't sell courses. एंड मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूँ कि शॉर्ट के तरफ बिठा के लॉन्ग का टारगेट हिट हो गया देख लो करके बोलने वाला इंसान भी नहीं। स्क्रीनिंग में क्या लेवल थी, वही लेवल है। मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव हो रही है, सिंपल एज दैट।
And thank you, Sajid, for making my morning more smiling. आप लोगों के आशीर्वाद सदा रहे हमारी चैनल। हाँ, Nilesh, any doubts? Sir, I haven't seen anything that you are explaining, and the way you explain, I feel you. Sir, I haven't seen anything that you are explaining and the way you explain. I feel you intentionally skip things that could only be observed if we put effort in backtesting and ask questions. Right, Usma. थैंक यू। कोई तो समझा बात को। अगर कोर्स में भेज रहे हो तो कमा कहाँ से रहे हो? वर्षा इसको ब्लॉक कर रही है। भाई एक चीज बताता हूँ, सुन ले। ब्लॉक करने से पहले तुम्हारे जैसे 1000 लोगों की सैलरी मेरी 10 मिनट की कमाई है। टेक इट इन a good impression or a bad impression, it doesn't matter. If you want that earning, सीखो। एंड बिफोर जजिंग वन, हाथ में 5 उंगलियां है, 4 उंगलियां तुम्हारे तरफ मुड़ी है। आप सही हो तो सही रहोगे, राइट? फ्री में एक टिप भी दे देता हूँ। ट्राई टू बी हम्बल इफ यू डोंट नो थिंग्स। लर्न, right? After learning, help someone else so that they can earn from you, okay? Rather just commenting nonsense, writing nonsense things. तुम्हारे जैसे लोगों की मैसेज पढ़ने के लिए एक इंसान रखा हुआ है। उतना नॉलेजेबल हो। क्या लिखा है? वर्षा, इतना शुद्ध हिंदी पढ़ना नहीं आता है, ट्रांसलेट करो। ओके, इतना नॉलेजेबल हो तो बड़े 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 दिग्गजों के जैसे किताबें लिखो।
Sir, there is a medical emergency in family, so I'm not able to concentrate. Will resume in few days. Hope everything is fine, Nilesh. कुछ भी मदद चाहिए पूछ लेना. Which hospital? And which city? Another joke. Sachdev, he has already written 3 books. Sir, Indian market दिखा दो. अंबिका देखो. मार्केट पीओए रेंज में है. प्रेशर बिल्ड होने दो. प्रेशर बिल्ड होने के बाद डेफिनेटली मैं खुद बोलूंगा स्विंग ट्रेड के लिए. इस जोन ऑफ एक्शन में कहाँ पे ट्रेड करोगे आप लोग बताओ. यहाँ पे ट्रेड करोगे तो जो भी डिप्लॉयमेंट रहेगा ना वो डिप्लॉयमेंट जाएगा. सो पेशेंस. फर्स्ट वीक आफ्टर 6 months नो इंडियन सेशन ट्रेड. अच्छा है ना. कल परसों में मिल जाएगा. ले लेंगे. एवरीथिंग हैज इट मस्ट टाइम. सो ट्रू. नीलेश टेलीग्राम पे बता देना. यूट्यूब में मत बताओ. अगर 3 बुक लिखा है तो यूट्यूब में क्या कर रहा है. यूट्यूब में थोड़े लोग हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो उन्हें गाइडेंस देने के लिए चैनल ओपन किया. एंड रही बात यूट्यूब जो चल रही है ना, इट इज देयर फॉर ओनली 150 मोर मिलीनियर्स. 150 मिलीनियर्स होते ही वो भी क्लोज हो जाएगा. वी हैव ऑलरेडी डन. ये 6 जो है ना, ये बंदा को अभी $10,000 चाहिए. तो आई हैव टेकन हिम अंडर कंसिडरेशन ऑलरेडी. सॉरी, बंदी है. So very soon even that will be gone. So don't worry.
stream will be there for next 30 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. And coming to the point of Usma, आपका जो question है ना, that's totally fine, right? I do understand it's your fifth day of live streaming, right? आपका right swing high, swing low नहीं मिल रहा है. In this point of action, आपको एक ही चीज करना है, right? Identify the major zone of conduct, right? अभी एक point of action में एक high point पकड़ो. उस हाई पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ मार्केट एक डेवलपिंग मूवमेंट दिखाता है, राइट? डेवलपिंग मूवमेंट दिखाने के बाद एक पॉइंट ऑफ एक्शन पे आके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस खत्म होती है, राइट? इस कैलकुलेशन पॉइंट में एक ब्रेक थ्रू दिखने दो, एक सप्लाई जनरेट होने दिखने दो, उसके बाद एक पीओआई रेंज ऑफ एक्शन जनरेट होने दो. इस पीओआई रेंज ऑफ एक्शन के साथ मेजर लिक्विडिटी अलोकेशन पॉइंट एनालिटिकल वे में दिखने दो. मतलब let a retailer get trapped and buyers and sellers get trapped. In this zone of conduct, you will see a major action plan. How to identify that major action plan? In the movement circumstances, there will be a build, there will be a reallocation. मतलब एक एग्जांपल समझाता हूँ 1 hour में, right? So at this point of action of 1 hour, what do you notice? There was a movement at mathematical zone of action. There was a reallocation towards the short, correct? In this reallocation of short, identify a pattern of in external liquidity zone, which is called as threshold. Okay. So long के लिए threshold will be looking like this, and short के लिए threshold will be looking like this. 3 candles. And mid candle range ऊपर होना चाहिए, and the first and the third candle should be below the first candle. थर्ड कैंडल क्लोज होने के बाद स्विंग ट्रेडिंग के लिए फोर्थ कैंडल में एग्जीक्यूशन होगा. इंट्राडे के लिए सेम इन द स्ट्रक्चर मूवमेंट. ये जो 1 आवर का कैंडल अलोकेशन पॉइंट है ना, इसका 15 मिनट्स में एक स्ट्रक्चर बिल्ड होते हुए दिखेगी. उस स्ट्रक्चर अलोकेशन पॉइंट में रीअलोकेशन देख के बने रहना, ठीक है? So this answers your 2 questions, which is how to identify your swing high and low point. With that, one more thing, the first question you asked in the morning, right? Post completion, wait for POI mark range. So this will be the allocations that you will be working on BTC. Okay. So work on BTC, gold I will let you know soon. Soon in the sense, evening session. Sir, when do we say it's enough for today, whether it's profit or loss? Some psychological guide. There is nothing called as enough. Okay. So only one thing I could say you is when you should stop trading for the day, right? You have to follow a simple plan rule. What is that simple plan rule? If in Asian session you have taken one SL of 20 points, 20 pips, which is 2 points in gold and 200 points in BTC. So what you will do? Your Asian session trade off allocation is done. One loss. Let it be your first loss, let it be your third loss. It doesn't matter. First loss or the third loss, one loss in Asian session, close for the day of Asian session. Asian session में आप trade नहीं करोगे. Okay. Next, coming down to London and New York session. You follow a rule of 40 pip, 4 points in gold, 400 points in BTC. So इस point of action में what will be your major thing?
If you make a loss after this first, if this is your continuous second loss of 400 points, right? You're done for the day. No more trade execution, no more allocation. Okay. If in New York session you have carried forward and with 2 to 3 wins of 100 pips plus, you have two options. You can take one more loss. If you know that it took out me, मतलब आपको ये बाहर निकाला उसके बाद मूवमेंट फिर से सेटअप के साथ बन रहा है तो वन मोर एग्जीक्यूशन because your 3 win is of 100 pips, right? So in 3 win of 100 pips, it's total 300 pips. In 300 pips, you can definitely give 80 pips back to the market. Okay, this is in scenario of lookout in perspective to the previous. All right. So next plan of action क्या होगा? अगर you started the day in Asian session, right? आपने एक भी एसएल नहीं दिया है कैरी फॉरवर्ड में हर एक मूवमेंट में यू आर लुकिंग फॉर 100 पिप्स प्लस, राइट? फर्स्ट ट्रेड हुआ, सेकंड ट्रेड हुआ, थर्ड ट्रेड हुआ, फोर्थ ट्रेड हुआ, there is zero losses. The second, third, fourth is all add-on quantities basically, right? Because first trade will be in your setup range of action and you will be holding this trade till the plan of movement, correct? So with this continuity till the time there is no structural imbalance in gold, there is no identification of S2 setups, then no exiting from the trade. अगर S2 setup build हुआ तभी exit करना, उससे पहले नहीं, right? उसके बाद लंदन सेशन कैरी फॉरवर्ड होता है, न्यूयॉर्क सेशन कैरी फॉरवर्ड होती है. At this point of action 5, 6, 7, 8, right? इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक फर्स्ट लॉस हिट नहीं होता है. हाँ, आप स्टॉप तभी करना जब आपको नींद आ रहा है. ओके, सो दिस विल बी इन योर विनिंग सिचुएशंस. इन योर लूजिंग सिचुएशन मैक्स टू मैक्स एशियन सेशन में एक लॉस, लंदन न्यूयॉर्क सेशन में एक लॉस, कंटिन्यूअस में हो रहा है. तो अगर कंटिन्यूअस नहीं प्रॉफिट 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 करके एक लॉस हो रहा है, देन यू कैन सी व्हाट इज द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दैट यू हैव गेन्ड आउट. उस हिसाब से यू कैन लुक फॉर वन मोर लॉस, वन मोर ट्रेड विद द लॉस एक्शन प्लान. लॉस एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? 400 पॉइंट्स से 800 पॉइंट्स की रेंज कैपेसिटी बिल्ड होती है, मतलब 4 पॉइंट्स टू 8 पॉइंट्स. बिकॉज इस सिनेरियो में गोल्ड में क्या किया आप, एक एसएल 4 पॉइंट्स का ले लियो, राइट? इस सिनेरियो में 8 पॉइंट्स का लॉस ऑफ एक्शन देख रहे हो, then definitely your previous trade should be in green. If not, you're closing out with 4 points, with 4 points, 2 points in Asian. So total already I have given 6 points, right? So you have to follow this simple and easy rule of action plan. Same scenario for gold as well, Usma.
Sir, how to identify the starting of the trade? Is it only setup or breakout or any cheat method? GTA खेल रहे हो क्या? चीट कोड डालने से आपको एंट्री पॉइंट दिखा देगा? हाँ, डेफिनेटली चीट कोड क्रिएट कर सकते हो, बट मैं करूंगा नहीं। सीखो वेंकट, सीखो। Wait, learn. I'm saying you, Venkat, instead of hunting for traits, if you focus your 22 days on learning, you will definitely will not ask this kind of questions. This is my promise to you, right? Focus on learning for 22 days, please. कहा गए सचदेव? oh, बेचारे के मुंह बंद हो गए शायद। चलो यार, आज के दिन में भी मॉर्निंग सेशन क्लोजिंग इन ग्रीन। Keep it up, guys. Keep it up. Last 15 minutes to go. Whatever doubts you guys are having, please do ask. Good morning, Vansh. क्लास नहीं है आज? सुबह सुबह आ गए हो स्ट्रीम पे? सर वही लगा क्या है? क्या लगा क्या है? अटेंडेंस लगा क्या है? यस सर, ये डिटेन कर देते नहीं। ओके वंश। At GMR Trading Profits, I have gone through all the playlist twice. Even then, I am not able to confident enough and understand that few questions are meant to ask for later times. You have to go through the playlist again and again, 2 to 3 weeks until you clearly see what has been shown without any doubts. Great.
It needs to have caliber. It needs to have, you need to have the caliber. Sir is modern WD again, who have 99.99 win rate. Sir, I am not anyone, I am Nitish. ओके मैं आज तक किसी को कॉपी नहीं किया हूँ, सो ये नाम मेरे ऊपर डालो भी मत. But yes, thank you for your kind words taken under the consideration. Sir, videos are simple with only 5 entry points, but it has a lot of depth. Don't build confidence too early. क्या बोल रहे हो उसमें? Videos are simple with only 5 entry points, but it has a lot of depth. Don't build confidence too early. You're saying this to me or you're saying this to GMR? If you're saying it to me, definitely I'll have that confidence because it's mine. If you're saying it to GMR, yes, Venkat, please do the back testing, do the forward testing, then 1 month of analysis, then come with a small execution point. सर आपके सेटअप पे डाउट होता तो रोज जॉब के साथ 6-7 घंटा आपके चैनल पे क्यों टिका होता? सर डाउट खुद पे है, आप पे नहीं. ठीक है जनाब. All the new members, welcome to the stream. Oh, this is nice. Total views 111, concurrent viewers 11, likes 11, average view duration time 11, 11, concurrent viewers chat rate is 11. हर एक चीज एनालिटिक्स में 11 है आज. Nice. All the new members, welcome to the stream. जो भी doubts है, please do ask. So जाने से पहले इंडियन मार्केट्स, भाई इंडियन मार्केट साइडवेज जोन में है आपके हिसाब से. ये पीओए रेंज ऑफ एक्शन में है, सो प्लीज शांति बनाए रखो. प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे, इन द मनी के भी नहीं बढ़ रहे, एट द मनी के भी नहीं बढ़ रहे. कीपिंग इन माइंड, बैंक निफ्टी is given a movement of nice 110 points, right? जो कि बहुत छोटा है. उसके हिसाब से प्रीमियम एटलीस्ट 50 पॉइंट्स के हिसाब से तो बढ़ना था.
वो भी नहीं बढ़ा है. आई एम टॉकिंग डीप इन द मनी. एट द मनी तो भूल ही जाओ. Sir, what is the importance of number 4 in your life? मतलब समझा नहीं. क्या हुआ वेंकट? As per my observation, you have a strong response for 4. Strong response for 4 मतलब every fourth message you're talking about. If that is the scenario that I go through as per what I am seeing, I don't skip the order. Importance of number 4.
Trade fearlessly, following a proper risk to reward. With following a proper risk to reward, control on your emotions. जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Make sure to carry the poker face in the directions of mathematical precisions. With that, no FOMO executions, no running candle executions. All the new members, make sure that you do 1.5 years of back testing, 1.5 years of forward relay bar testing, 1 month of live analysis, then come with a small capital and try to build the confidence and the capital. एक ही चीज बोलना चाहूंगा, control on your patience, build patience mindset. With that, try to be calm while you're in the trade. This is Nitesh signing off. मिलते हैं शाम पे, तब तक के लिए take care, bye bye.